A very good morning to all. I am Abhijit Kaur Saharan. My dear students, before the starting of AV assignment, we are taking a pledge. You may speak with me in loud voice. Let's we start the pledge. I am Abhijit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash our hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. After the taking of pledge, now we are doing English 1. Chapter number 3rd. Name of the chapter is A, Am, and The. A, and the. आपने जहाँ पे फिल करना है कि अ आएगा, एन आएगा, जहाँ द आएगा, ठीक है. एंड वी यूज अ बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच begin with a consonant sound. I repeat it again. We use a before singular noun which begin with a consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने यूज करना है, ठीक है. जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट देम वॉवल वर्ड्स, ओके, उसको हम कॉन्सोनेंट वर्ड बोलते हैं. एंड यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विद अ वॉवल साउंड. जो हमने ए एन यूज़ करनी है वो हमने वॉबल साउंड के साथ यूज़ करनी है. वॉबल लेटर के अकॉर्डिंग देख के लगाएंगे. अ जो लगेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है. इफ़ यू हैव गिवन द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर और विदाउट, ठीक है. इफ द गिवन लेटर इज स्टार्टिंग विद दिस ए, ई, आई, O, U. If the letters begin with these letters, ठीक है, अगर J स्टार्टिंग में आपको गिवन है लेटर्स, अ गिवन है, E गिवन है, I, O, U, then used an. Okay, if these are not starting of the letter, ठीक है, then don't use am, then write with the a. Okay, is that clear? Now you have given a picture of elephant, mouse, starfish, orange, book, river, bottle. आपको जो सारी पिक्चर्स गिवन है, अब हमने इसमें से देखना है कि फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द लेटर, ठीक है, फर्स्ट और बिगिनिंग ऑफ द लेटर कौन सा है. अगर बिगिनिंग ऑफ द लेटर वॉवल है, देन you have to write an. If the beginning of letter is not started with these letter, goes with a. Okay, is that clear point? अब elephant है, you have given a elephant, then beginning of the letter is e, e, ठीक है. Then what you have to write? An, an elephant. And the next is mouse, and beginning of the letter is m. M is not mentioned in a vowel sound. Then mouse, what you have to be write with the mouse? A mouse. And the next is starfish. Then s is not given in a vowel sound letters, ठीक है. Then what you have to be write? Write a starfish.
In the next, you have given a orange. Then beginning of the letter is O. O goes with A, N, because O is a vowel sound. ठीक है? Then write B here, A, N, N. Next is book. First letter of book is B. B is not a vowel word. ठीक है? Vowel letter नहीं है वो. Okay? Then what you have to be write? A book. Then next is a river. River. Then first letter is R. Then R is not a vowel letter. Then what you have to be write? A river. And the last one is bottle. Then first letter of the bottle is B. B is not a vowel letter. Okay? Then what you have to be write? A. Yes, very good. Write B here. A. Is that clear बच्चे? AN किसके साथ यूज करना है हमने? वॉवल लेटर के साथ. ओके? अ क्या है हमारे लिए? एक कॉन्सोनेंट टर्म के साथ हम राइट करेंगे. ओके? इन द नेक्स्ट यू हैव गिवन अ पार्ट ए. राइट अ और एन बिफोर दीज नाउन्स. आपको जो नाउन्स गिवन है, ठीक है, तो आपने अब राइट करना है. इट्स अ वॉवल साउंड, देन यू हैव टू बी राइट ए एन. If it's we are not write the first letter of a vowel, then you goes with a. Okay? Then first you have given a cup. The letter of cup is C. C. Then C is not a vowel letter. Right here a cup. In the next you have given a blank. Then umbrella. Umbrella. Then first letter of umbrella is U. U is a vowel letter. Right here N. Very good. N. An umbrella. In the third point you have given apple. Then first letter of apple is A. A is a vowel letter. Right here an. An apple. Then fourth point you have given a blank. Then table. Table. T is a consonant term. ठीक है? कॉन्सोनेंट लेटर है जो आपके पास, तो जहां पे आपने क्या लिखना है? अ टेबल. फिफ्थ पॉइंट इज डैश एग. E is a vowel letter. Then with the vowel letter, what we have to write? An. Right here an. An. An egg. In the sixth point you have given a arm. First letter of arm is A. Then A is a vowel letter. Then arm is goes with A. An. Arm. In the seventh point you have given a blank. Then window. Then first letter of window is W. W is a consonant sound. ठीक है? कॉन्सोनेंट वर्ड है जो आपके लिए. ओके? तो आपने क्या लिखना है जहां पे? अ विंडो. Then in the eighth point dash the mango. Then first letter of mango is M. M is a consonant. Then consonant word goes with A. Right here a mango. In the ninth point you have given a blank. Then aeroplane. Then first letter of aeroplane is A. Then A is a vowel letter. Vowel letter goes with A. N. Right here A. N. An aeroplane. In the last point you have given dash. Then classroom. Then classroom का first letter क्या है बच्चे? Beginning of the letter is C. C is a consonant.
देन कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज करना है हमने? अ, राइट हियर, अ classroom. I hope you will understood the concept. Thank you.